Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video we are going to continue with the fourth exercise of rational and irrational numbers. Moving on to the last question of the exercise. Using the following figure, show that BD is equal to root of x. Now we are given the figure over here. Okay, what is given? First we have to write down the given. So given, we are given that AB is equal to x centimeter. ठीक है, and BC is equal to 1 centimeter and OBD is right angle triangle. ठीक है, I'm writing short form over here. Now we have to prove, what we have to prove is that BD is equal to root of x. We have to find BD. ठीक है, BD is a part of this right angle triangle. Now right angle triangle में हमेशा Pythagoras theorem apply होता है. We'll first write down that OBD is a right angled triangle with OBD as right angle. ठीक है, now OBD is the right angle, so OB square plus BD square is equal to OD square. ठीक है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दिस इज अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem. Okay, you have to write the statement, it is very important. Now according to Pythagoras theorem we have this. Now we have to find BD. तो BD को एक साइड पे रखेंगे and we'll shift all the other things on the other side. So BD square is equal to OD square minus OB square. So BD चाहिए मुझे, I don't want square, so I'll take square root on both the sides. So BD is equal to OD square minus OB square का square root. Okay, taking square root on both the sides. So this is BD. Now we have to find BD. OD क्या है and OB क्या है, we have to find this and substitute over here. Only then we will get BD. To find BD, I will have to find OD and OB. OD and OB find करना है. OD is equal to OC is equal to OA. Okay, these are radii of this semicircle given over here. सो OD मुझे तब पता चलेगा जब मुझे OC पता चलेगा एंड OC मुझे तब पता चलेगा जब मुझे AC पता चलेगा. ओके, OC इज़ हाफ ऑफ दिस होल थिंग. ये पूरा डायमीटर है एंड ये रेडियस है. ओके, तो डायमीटर पता होगा तो ईजिली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ये पता चला तो OB फाइंड करना इज़ ऑल्सो वेरी ईजी फॉर अस. सो let us find OC first. It is the aim over here. So OC के लिए I should know AC. So AC के लिए AB and BC तो यहाँ पे दिया हुआ है. So AC is equal to AB plus BC. Okay, A dash B dash C. B is between A and C. Now A B क्या दिया हुआ है, it is x and B C क्या दिया हुआ है, 1. Okay, so AC is equal to x plus 1. Okay, now AC is x plus 1 तो OC क्या हो जाएगा, half of x plus 1. So therefore OC is equal to half of x plus 1, that is equal to x plus 1 by
2. ओके, तो ओ सी पता चल गया, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. नाउ therefore I can say OD is equal to x plus 1 by 2. Mark this as 1. Okay, now OD पता चल गया है, OB फाइंड करना है हमें. OC is nothing but OB plus BC. ओके, आई वॉन्ट OB, तो OB को एक साइड पे रखूँगी एंड OC एंड BC को एक साइड पे ले लेंगे. OC माइनस BC इज इक्वल टू OB, O डैश B डैश C. ठीक है, एंड OC एंड OD को यहाँ पे रीजन लिख देंगे, रेडाई ऑफ द सेमी सर्कल. नाउ OC, okay, OC we know it is equal to x plus 1 upon 2. BC we know is 1. This is equal to OB. Now x plus 1 minus 2 upon 2 हो जाएगा. Okay, so this is x minus 1 by 2. OB is this. Mark this as 2. We had BD is equal to root of OD square minus OB square. Okay, substituting 1 and 2 in this. So substituting 1 and 2, what are we going to get? OD का value, what we have, OD is x plus 1 by 2, the whole thing का square, minus OB we have x minus 1 by 2, this whole thing का square हो जाएगा. ठीक है, now we have to solve this. So we have BD is equal to, this is of the form a plus b the whole square, so ये हो जाएगा x square plus 2x plus 1 upon 2 square is 4 minus, this is of the form a minus b the whole square, so it is x square minus 2x plus 1 the whole thing upon 4. 2 का square 4 हो जाएगा. Okay, now put these in brackets and now I can take common denominator over here. 4 है दोनों का denominator. ठीक है, so I can take common denominator. Now x square plus 2x plus 1, we'll open the brackets, minus x square plus 2x minus 1. Now minus x square plus x square cancel हो जाएगा, plus 1 minus 1 cancel हो जाएगा. So what do we have over here? Root of 2x plus 2x gives 4x upon 4. 4 cancel हो गया, so we have root of x. Therefore BD is equal to root of x. Now to find BD, what we did was we wrote the given first. Diagram को observe करो and what is given in the figure. Okay, write it down and then what you are supposed to prove. क्या prove करना है? BD is equal to root of x. We are supposed to prove that. Write it down and then to begin with proof. ओके, BD पे फोकस करना है. BD इज अ पार्ट ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज वी नो पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, सो वी यूज दैट ओवर हियर. तो वी गेट BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. नाउ OD एंड OB फाइंड करना है, तो BD आराम से मिल जाएगा. OD एंड OB वी कैन फाइंड वंस वी नो OC, क्योंकि OD इज इक्वल टू OC. ओके, तो O एंड OB इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ OC. ओके, सो OC फाइंड करना है. OC ओवर हियर इज हाफ ऑफ AC एंड AC फाइंड करना इज वेरी इजी बिकॉज AB भी दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है. सो AC फाइंड कर लिया. AC फाइंड करने के बाद उसका हाफ दैट इज OC हो गया. OC का वैल्यू इज इक्वल टू OD का वैल्यू, तो आई गॉट OD का वैल्यू. OC is nothing but OB plus BC. I know BC, I know OC, so I can easily find OB.
OB मिल गया, OD मिल गया, we'll substitute the value and solve. On solving we'll get BD is equal to root of x.